Thank you. We are going to discuss paper second. I'll be discussing the syllabus today. Sort of introduction for the syllabus, the scope of syllabus and all. And once we are done with this, maybe from next week onwards, we'll start with teaching. Right? And today, let's see the scope. Syllabus का scope देखते हुए समझेंगे कि क्या syllabus में क्या-क्या लिखा हुआ. I'll be teaching you only polity part, not IR. IR का explanation या फिर discussion नहीं करेंगे. GS paper 2. So the syllabus of paper 2 can be divided into these 4 broad topics. Now the points which we are going to discuss, they may mean number of things. There are multiple points which you can actually add into it. There are few classes those who provide detailed syllabus, right, which is basically not given by the UPSC. But if you go back to previous question papers, right, you'll get to know that the topics which are asked, you can put them under some other heading in the syllabus. But the best option is to read what they have given, what UPSC has provided, and only prepare accordingly. Because if you go into details of syllabus and if you simply start, extending the length of different topics under syllabus, probably you will end up writing one more book. Right? Yes, just topics under the points given by UPSC. So that doesn't make any sense. I don't find that to be relevant. Of course, previous year question papers needs to be taken for help while preparing. But then, interesting thing is, if you start deciphering each and every aspect of it, as I said, you will end up writing a book, at least of 100 pages. That is the scope of syllabus, practically speaking. Right. So let's not go into that exercise. Let's not look at the syllabus from that point of view. The overall focus while understanding the scope and nature of the syllabus must be on understanding possible areas which you need to focus on, which you need to touch while you are preparing for UPSC's exam. Now, looking at mains and prelims, these topics are also covered in prelims syllabus. If you look at the prelims syllabus, you'll find that it is almost overlap. And yes, it is, no doubt. But the matter is, the way they ask questions in prelims are very objective. And in mains, they are subjective and mostly dealing with current affairs. Like, for example, if we're going into the syllabus, for example, if you are aware of the fact that there are some political developments going on in Maharashtra in last 1.5 weeks, or more than that, right? And those developments have resulted into one of the technical or legal issue of anti-defection and 10th schedule. And you must have definitely come across number of articles in newspaper, either pro the present situation or against the present situation. And there are articles which explore the scope of 10th schedule and anti-defection. Now, you won't come across any term of anti-defection as such in the syllabus. It is not mentioned. But that topic remains an important topic for our discussion or maybe for UPSC. So how do you understand the scope? How do you get the hold of possible topics which you may come across in your mains? Basically, that depends on your understanding and your approach. Now, how do you shape your approach? Looking at previous year question papers. Right? But looking at question papers helps you understand the scope and nature. If you list down the syllabus and say that no, all these topics are basically part and parcel of the syllabus, and then start preparing for it, then that is not precise or that is not correct way of preparing. Right? Probably they might have asked question on anti-defection, but their approach of asking question is our interest and not anti-defection as a topic. I hope you are getting this. Everyone, right? So reading anti-defection from an academic perspective makes no sense. It probably may not help you in answering or getting marks in UPSC. Right? You need to prepare it from the current perspective, from journalistic perspective, and only then you'll be in a position to understand the topic and then get the marks. Ultimately, objective is, yes, you should be able to write answers the way they expect from you, not the way you want, or not also in the manner that you know, right? So what they expect, that should be reflected there in the answer, and only then you will be scoring the marks. Am I clear? Everyone? Right. So understanding syllabus and going into details of this, we have to keep some limits.
and those limits are set by previous year question papers. I hope this is clear, right? So let us go into details of the syllabus. There are these 4 points or 4 broad topics under which we have divided the syllabus: Indian Constitution, governance, social justice, and development process. Apart from that, there is one more section of paper 2, and that is international relations, basically bilateral relations in India and neighborhood, right? Or Indian diaspora and its relevance, whatever. So all those points will find in last part of paper 2 syllabus. Okay? So let us see one by one. एक point देखते हैं. We'll first simply try to understand the broad idea of these points in the syllabus. If you look at the original syllabus given by UPSC, they have given it in एक line मध्ये दिलेलं आहे. आणि पुढे तरी त्यांनी in some places they have also mentioned etc. So that etc is very interesting. But then let's understand this. So under Indian Constitution, what we need to prepare or where syllabus starts is historical underpinnings. Right? Historical underpinning. What do you mean by historical underpinnings? Basically history of Indian Constitution, history of making of Indian Constitution. So this history also make a part of evolution of Indian Constitution, right? Or some features also. But when you prepare for history, historical aspect, from where should we start? हिस्ट्री की बुक लेके बैठे कि हम लोग एंशिएंट कैसे रहे क्या अभी तक पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तैयारी करने के लिए नहीं तो आफ्टर 1947 एग्जैक्टली गुड. तो रेगुलेटिंग एक्ट्स है ना, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं. You must be knowing about British government regulating or looking after Indian territories, and their parliament passed several laws. Right? So from where exactly you should start preparing for historical background? I don't think that starting from regulating acts would be, at the first place it is not necessary, one. But that doesn't mean that it is not important. You will have to go back to search for history of Indian Constitution or Indian historical underpinnings. It is not history of Indian Constitution. Right? Historical underpinnings involves number of factors which have contributed in framing the Constitution, which may include social, political, economic, international factors, which have ultimately, which had influence on the framers of the Constitution, and ultimately they, drafted this Constitution, which we are going to study. So historical underpinnings involves number of aspects. बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पे देखी. जैसे we have to consider the India's freedom struggle and different movements, leaders, their approach of organizing the struggle, then the values that they practiced, right, or practiced and preached for that matter. Then international powers and some other, say, international events like French Revolution, US War of Independence, or maybe US Independence, right, Russian Revolution, Chinese Revolution, getting it? Then Cold War, not Cold War as such, but then the possibility of Cold War, both wars, world wars. These things are definitely we need to definitely consider while we talk about historical underpinnings. So searching for Indian constitutional history in Indian history is not enough. Now I am not asking you to read world history line to line and first understand world history, then Indian history, and then start reading constitution. Certainly not. But you must ensure that while you are reading or while you are studying modern Indian history, while you are studying world history paper first, right, make sure that you keep watch on such events which had a profound influence on India's freedom struggle and in turn on India's constitution. So these regulating acts and government of India acts and charter acts and all, these are few examples, right, which ultimately created sort of a legal, technical background for Indian constitution and some of its provisions. But then there are other values which are practiced in different countries, right? European countries, or maybe some of them were Eastern countries, and those practices, those values have also been added into the constitution. So we have to see it from that perspective. You won't get any specific book to read the history. You probably will, but then see, reading that book, if you elaborately talk about history of Indian constitution and its making, right? We cannot afford to read and dedicate that much time to such book just for answering one question. Probably they may ask one question. That will over 10 marks. Ready? So what is the better option? Better option is having an integrated approach. So while you read and understand and learn Indian history in first paper,
Indian culture in first paper, world history in first paper. Right? Just keep a view that you have to use this understanding and knowledge, for paper second also. Clear? Everyone? Right? So understanding historical underpinnings, that is supporting points, right? So needs to be clearly studied from different sources. There is no single book. Probably some of you might be aware about Lakshmikant. और उसका पहला चैप्टर पढ़ लिया आपने, काम हो गया. अब जाके ऐसे लिखेंगे कि बिल्कुल 10 का 10 मार्क मिल जाएगा. वो पूछते हैं ऐसे सिंपल चीजें और बहुत ट्विस्ट करके. हमने जो पढ़ा है वो हम लिख नहीं पाते वहां पे. तो वैसे पढ़ो या फिर चीजों को वैसे समझो जैसे वो पूछने की कोशिश करो. पढ़ो. Right. So historical underpinning. Then comes word evolution. So evolution of what? Evolution of constitution. है ना? So constitution का evolution तब से चालू हो रहा है ना जब से उसके making की process चालू है. So यहाँ पे here we'll have to precisely restrict our study to making of the constitution, and then after making how it evolved over the period of time and what is present status of the constitution. So this is specifically post-independence history, partially pre-independent and then post-independent history, right? Which you have to trace and then understand the evolution of constitution. Correct? Like for example, right to privacy. Right to privacy is of a recent, you may say, origin. However, it was there. It was there in Article 21 itself. But then it was recently recognized as a separate, independent fundamental right. Not independent, but a part of Article 21, part of life and liberty. So this is of recent, for that matter, or this is recent development in Article 21 and its understanding and its application in India. Right? So this is evolution. Probably this same right to privacy should have been guaranteed way back in 1950, or probably the same article means same things in 1950 as you see today. But then in that time, in 1950s, 60s, 70s, 80s, we did not invoke that provision. We did not ask court to identify right to privacy as a part and parcel of your evolution. Right? So now we identify it. So this is evolution. This is how your constitution evolves. Right to education has been amended. It was there in the constitution. It was not guaranteed, but now it is guaranteed. Article 21A. Now this is also part of it was considered by the Supreme Court that education is an indispensable aspect of quality life or good life, worth living life. It was identified later on. But does that mean that in 1950s and 60s, right to education was not necessary for quality life? No, that certainly wasn't the case. But then we are now recognizing it. We are now identifying it. We are now accepting it as a matter of the same article. एक ही line लिखा हुआ है. Every person shall have the right to life and personal liberty. A state shall not deny any person, except according to procedure established by law. If you look at the article, if you look at the line, there is one single line, in the article, but then has got number of interpretations. Are you getting this? There are number of interpretations. Those interpretations basically contribute to evolution. But then apart from that, you must also be knowing about something called as amendments. So these amendments also equally contribute in evolution of the constitution. They also contribute in evolution. So you have judicial interpretations contributing in evolution, and we also have got amendments made by legislature contributing in evolution. And that's the EWS का reservation. Barabar? I hope you must be aware of it. Is new change in the constitution. Whether that is sustainable or not, that is different story. Court will look into it. समझते हैं, right? So evolution is basically a result of continuously amending constitution and making it more relevant for the present context of present time, and also different interpretations by the Supreme Court of existing provisions of the constitution, again to make it more relevant for the present time. See, ultimately, constitution must serve the demand of time, right? So evolution in this amendment process and Supreme Court's interpretation of the constitution keeps your constitution alive. So we generally call the constitution as living document. What do you mean by living document? It doesn't become irrelevant with time, right? It has ability to adapt to the demands of time. It can adopt itself, right? But not itself, right? It is through the interpretations of the code and through amendments you can see that it has that adaptability. Right? So except for part 2 and part 21 of the constitution, you'll find rest of the constitution carries the feature of timelessness. What do you mean by timelessness? It may exist in perpetuity. It may continue. It may still be relevant maybe after 100 years or 500 years.
as it was relevant. If you go back 75 years back, in every single year, it did not lose its relevance. With amendments and with interpretations, it started becoming more and more relevant with the time. So that is the beauty of Constitution. There, exactly there, where it starts becoming more relevant, right? We will get to know like how it has evolved. Basic structure, Section 377 of IPC, was earlier declared to be unconstitutional by same court, same Supreme Court, and now it is declared to be constitutionally valid. Then now it is said that having different sexual orientations is a part and parcel of your liberty. Am I correct? The same matter of LGBTQ was brought to the Supreme Court way back in 1970s, when the Supreme Court said that no, it doesn't exist. It is not permissible under Constitution. Right? That section then was held to be constitutionally valid. Aaj, court bola yes, these different orientations, sexual perceptions and orientations are valid under Constitution. And so section which says 377, which says that it is not possible, declared to be invalid. So this is how the Constitution starts evolving. So these are some of the examples which I am intentionally giving you just to make you aware about or understand what does it mean. Then we have got something called, okay fine, one more thing. See, this is term in the syllabus, basic structure. Right? You will find in 1973 Supreme Court came up with the idea of basic structure. So does that mean then that before the judgment of Keshwan Bharti versus State of Kerala, there wasn't any basic structure? No, certainly not. There was. All ideas and values which are identified in the basic structure as Supreme Court used to be there at the time of framing itself. Right? But Supreme Court now identified them separately. That these are the values, these are the points, these are the elements which cannot be amended, which cannot be voided. And then they clubbed together and they brought them under one doctrine called as Doctrine of Basic Structure. Foundational values of the Constitution, in simple terms. So foundational values, if you look at them, the court gave this list, not list as such, but then this judgment in 73. So that is the question. Does that mean that till 73, from 1950 onwards, 26th January 1950 to 24th of April 1973, does that mean that for this time period, there were no foundational values of the Constitution? No, certainly not. There were. What is the point here? The point is, we only identified them separately and now say that these are the values which cannot be compromised at all. So there were circumstances in the country, there were events going on in the country which forced your Supreme Court, to come up with the idea of basic structure. Some of you might have gone through the preamble of the Constitution, must be knowing preamble. And there was a debate going on recently. People are saying like, see, the term socialist and secular was added later on. It was never written in the basic or draft Constitution. Even unity and integrity was not written in the draft Constitution. In the 42nd Constitution Amendment, it was added in the preamble, and so it should be removed. So now if you look at the Constitution, if you go through the details of the Constitution, you will find that though these values were not explicitly mentioned, for that matter even democratic, word democratic republic has not been mentioned anywhere in the Constitution. We the people of India has not been mentioned anywhere in the Constitution except for preamble. So does that mean that let's remove all those values then? Even term sovereignty will not come across the term sovereignty in the Constitution except for preamble. Does that mean that no, these terms which are mentioned in the Constitution, preamble, are irrelevant and should be dropped, should not be continued? No, that doesn't mean that. Basically, Constitution doesn't explicitly talk about or explicitly, writes about those values. It is not possible. Right? I'll explain you that. Why not? Why not? So later on, once we start the teaching, that time I'll let you know. क्यों नहीं हो सकता explicit? There are some words which are very vague, and any law, while writing, cannot keep vague words in its terms, in its articles. Something that is really very vague and cannot be defined in precise terms cannot be mentioned as a part of provisions of Constitution. That's the reason why some of those values are not explicitly mentioned in the Constitution. But there are several articles which mean the same thing. Right. So 42nd Amendment definitely contributed in evolution of the Constitution. Right. By adding those values in the Constitution. So when we look at historical underpinnings, evolution, amendments, then basic structure, as it is mentioned here, all these things basically are one and the same cheese as well. So these evolution and amendments, so they basically mean same thing. ये सब लोग
लोग एक चीज की ही बात करते हैं। बस फर्क यह है कि हम लोग जब पढ़ेंगे उसको, while you read these things in your books, right, you will have to focus on specific topics. So while you read basic structure, very expert. Yes. Excellent. So, so when we look at those points, right, we'll ultimately find that it is one and the same. So when you read any material, right, please make sure that you keep in touch with the points mentioned in the syllabus, right, so that your study or your preparation should be holistic. Right? You need not read new things unnecessarily, new books unnecessarily for these simple points. I don't read this. Everyone. There's one more point. Last. Comparison. Scheme with other countries. Last one. Now what does this mean? Yes. बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ना चालू करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना है। अच्छा, और यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स एवरी ईयर, एक क्वेश्चन है, लगभग 15 या 10 मार्क्स। तो क्या करेंगे? कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी पूछा हूं, अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो they have asked comparison between British and Indian judicials. These are the questions which they have already asked. So the simple way of preparing this topic is when you read references, when you read material for understanding Indian constitution, जहाँ पे अपने बाहर से किया हुआ है, जैसे ट्रेड और फ्रीडम ऑफ ट्रेड में ऑस्ट्रेलिया से, तो हम लोग इमीडिएटली कंपेयर करेंगे, मतलब by in lectures and teach you that way, right? So we can immediately compare and understand it. समझ सकते? बाकी अलग से बुक्स लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये एक टॉपिक के लिए शायद 2-3 साल लग जाएंगे, 2-3 शायद 10 साल में, तो इट मेक्स नो सेंस। सेकंड important point, important reference for this particular content newspaper. So you have to be very careful when you read newspaper. And I think newspaper, news compilation नहीं बोलना, जो monthly magazine में पढ़ते उसमें से नहीं, newspaper पढ़ोगे आप रोज, every day, to get a hold over such topics. जैसे कि Indian presidential election की बात करते हैं, तो फ्रांस के president की election की बात करते हैं, तो presidential system in France and presidential system in India, you'll find that they may ask comparison on the subject. Recently, Canadian Supreme Court used a reference of, in fact, in one of the judgments, they talk about the basic structure document that is defined or designed by, invented, I would say, by Indian Supreme Court. Case on the article reference on Canadian Supreme Court. You may come across a question on the doctrine of basic structure under Indian Constitution, right, and Canadian Constitution. वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं, लेकिन वही टर्म्स उसी तरह से यूज किए जाते हैं, तो आप उसके इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में नहीं आना, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। तो हमारा फोकस बस वैसे है, मैटर इज आर वी फोकसिंग ऑन दोस पॉइंट्स, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट, अदरवाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक, बट if you could manage to spare around 5 to 6 years of your preparation, then you can also prepare for almost all constitutions across it. वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझते हैं? सिर्फ क्वेश्चंस तो आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, क्वेश्चंस आने ही। प्रिपेयर कैसे करोगे? तो प्रिपेयर हम लोग इस तरह से कि करंट में आज देखने की कौन सा रेलेवेंट फैक्ट, कितने रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स, शायद 4 या 5 थ्रू आउट पूरे साल में आपको इस तरह का कंपैरेटिव जो स्टडी करना पड़ेगा, वो शायद 4 या 5 ही इश्यूज है। तो वो तो हम लोग बिल्कुल एक साथ में 4-5 इश्यूज नहीं तैयार कर सकते, हम लोग बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, समझ में आ रही है? एवरीबॉडी so बस वो फोकस रहे, abortion laws in India and US very recently this, so probably UPSC may not ask you about abortion laws, but it may ask you about idea of due process of law in India and its or India and US in some level.
is Article 21 that abortion laws have an effect on. So बस ये आइडिया आपको आ जाए कि हाँ इस तरह से मुझे देखना है इसको या फिर इस तरह से मुझे न्यूज़ को फिल्टर करना है, उसको मुझे पढ़ना है, इतना भी अगर आपको समझना है तो भी मुझे लगता है कि आपको आपका लगभग 50% काम तो यही करना है, 50 नहीं मैं 60-70% होगा अगर इतना आपको क्लियरली समझे मुझे ये पॉइंट्स यहाँ से इस तरह से प्रिपेयर करना है, इतना समझ में आया तो आप समझ लो कि आधा तो आपने रेस उधर ही जीत लिया। लेकिन अभी ट्रेंड्स अगर रिसेंटली देखोगे ना तो ट्रेंड्स ऐसे बने हुए हैं लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल, वो तो अपना दे वेट फॉर वो वीडियोस ऑनलाइन और रिकम्पाइलेशन सर मैं क्यों ना रोज में 1.5 घंटा सर मुझे घंटा देना चाहिए, आपको लगने से नहीं है। आप अगर ऐसा होगा ना कि मंथली मैगजीन पढ़ के आपका काम बच जाता है तो आप बस पिछले 5 या 10 साल के जो टॉपर्स है सिर्फ टॉपर्स फर्स्ट रैंकर्स जो उनके बस मार्क्स देख लो मेंस के कितने 1200 किसको नहीं मिला होगा 70-50 मार्क्स का एग्जाम है ना तो 1200 तक कैसे पहुंच पाते हैं हम और लीस्ट जो है मतलब चलिए आपका अगर यू आर नॉट ड्रीमिंग फॉर बिकमिंग द टॉपर ऑफ एग्जाम बॉटम में जो है ना एकदम लीस्ट मार्क्स मिले उसका मार्क्स देखो समवेयर अराउंड 600-700 मतलब 1000 मार्क्स का आप बिल्कुल गड़बड़ कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है गड़बड़ कर सकते हो, बात ये है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं ऐसा मटेरियल जो हम लोग क्वालिटेटिवली वहां पे लिखे और जिसके ऊपर हम लोग मार्क्स फेच कर पाए। इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि 700 किसको मिल रहा है और किसको मिल रहा है समझ लीजिए कि 1100 तो उतना तो गैप है नहीं क्वालिटी का, एटलीस्ट उतना तो हम लोग ब्रिज कर सकते हैं बाय रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। रीडिंग न्यूज़पेपर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस, वो एक रेफरेंस है आप समझ लो पढ़ना ही 2.5 hours you can definitely give for newspaper on a daily basis, on a daily basis you may find this to be sir काय थोड़ा सा स्मार्ट वे समझते तर स्मार्ट सांगितलं तुम्हाला काय 600-700 मार्क्स पण आपल्याला मिळाले ते चालते 800 मार्क्स you may be somewhere in the list by traditional and there is no guarantee of this। हाँ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि you will get good marks if you could manage to read newspapers properly and could manage to include those that material in your answers। तो बात करेंगे इसके ऊपर लेकिन आगे जाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो यूनियन एंड स्टेट्स दिस इज सेम सेम टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग फर्दर इनटू डिटेल्स ऑफ द सिलेबस। सो यूनियन एंड स्टेट दिस टर्म्स आर डिफरेंट, आप इसको चाहो तो सेंटर एंड स्टेट ऐसे बोल सकते हो। नहीं आप नोट्स नहीं निकालोगे तो मतलब वी विल बी शेयरिंग दिस, नहीं आप चाहते तो लिखो नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज सिलेबस है। So यूनियन एंड स्टेट्स को मुझे लगता है कि आपको समझता है स्टेट्स महाराष्ट्र कर्नाटक स्टेट्स यूनियन आप इसको चाहो तो सेंटर बोल सकते हो, यूनियन एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है उसका एक मीनिंग होता है स्पेसिफिक मीनिंग है उसका, सेंटर नहीं है उसका मीनिंग, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इतना समझता है। तो यूनियन एंड स्टेट अब ये दो सेटअप है हमारे पास ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लगभग आइडेंटिकल। जो सेटअप आपको यूनियन मतलब नेशनल लेवल पे दिखेगा लगभग वैसे ही सेटअप आपको रीजनल लेवल पे दिखेगा, दैट इज स्टेट है ना, जैसे लेजिस्लेचर है, सीएम है, उसके बाद काउंसिल है, राइट, एवरीबॉडी, हाई कोर्ट एंड ऑल, वैसे आपको सेंटर में भी दिखेगा, उस तरह का सेटअप हमारे पास सेंटर में। अब जब हम लोग ये दो लेयर्स की बात करते हैं यूनियन एंड स्टेट, इनके अपने अपने कुछ फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए डिफाइन किए हुए, इनकी अपनी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज और वो रिस्पांसिबिलिटीज और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए परफॉर्म करने के लिए इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आप पावर समझ लो चाहोगे फिलहाल इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया हुआ। अब जब ये अपनी अथॉरिटी को यूज करते हैं और अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे कभी या फिर कभी क्लैश कर दे। और आपने न्यूज़पेपर में काफी बार देखा रहेगा कि कोई किसी स्टेट के सीएम है वो पीएम को ब्लेम कर रहे हैं, पीएम है तो वो सीएम को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ चलता ही रहता है। नहीं ऐसे न्यूज़पेपर में देखा रहेगा, वेस्ट बंगाल बहुत पर्टिकुलर नहीं देखा, महाराष्ट्र भी था वो गेम में कुछ ही दिन पहले, अब सब एकदम एवरीथिंग इज कोजी नाउ, राइट, एटलीस्ट 11th ऑफ जुलाई 11th को बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है, देखते हैं मतलब विल गेट टू नो। बट देन यू हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस न्यूज़पेपर, देख सुना तो रहेगा ऑनरेबल सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल क्रिटिसाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइम, और वहां से बोला जाएगा कि नहीं वो स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइम, ये चलता रहेगा। कभी-कभी आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब ये सवाल भी तो आता है कि ये झगड़ते क्यों है भाई, एक मतलब वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो भी तो इंडिया में रहते हैं ना, नहीं चांद पे तो घर नहीं उनका कि वहां पे जाके इनको प्रोवाइड करनी है कुछ सुविधाएं, इंडिया में रहते तो भी ये वही गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं वेस्ट बंगाल के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोट करते हैं, तो फिर उन्हीं के अगर बेनिफिट की बात की जा रही है तो दोनों गवर्नमेंट अलग अलग बेनिफिट कैसे बात कर सकते हैं? तो इशू वो नहीं है, इशू यहाँ पे ये है कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, स्टेट्स को सेंटर नहीं बना, मतलब स्टेट्स को सेंटर जन्म नहीं देता, उनके पावर्स, प्रिविलेजेस, रिस्पांसिबिलिटीज, फंक्शंस ये यूनियन गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। स्टेट के पास अपने कहां से कॉन्स्टिट्यूशन से, अच्छा सेंटर को कहां से मिले कॉन्स्टिट्यूशन से? तो इनमें जो आप असर्टिवनेस देखते हो, असर्टिवनेस समझते हो, being assertive about your position, your rights, your powers, your jurisdiction, right? So that assertiveness is basically because of the constitution itself. So what we are going to study under this topic is functions and responsibilities of both union and state. जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कल को बोल दे कि हम लोग इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करेंगे और यूएस और इंडिया के रिलेशन कैसे होगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सीएम एंड हिज कैबिनेट विल, नहीं हो सकता ना, क्यों? इसके लिए रिप्रेजेंटेशन और इसके लिए फंक्शंस किसको दिया? सेंटर को दिया। सही बात है। और कल को ये भी हो सकता है कि होम मिनिस्टर सेंटर के ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज दैट आई विल मैनेज द ट्रैफिक इन पुणे। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता कि पुणे के ट्रैफिक का रिस्पांसिबिलिटी स्टेट के पास दिया हो। बात समझे? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग या फिर सब्जेक्ट्स है, फिर मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, जिसका शायद कुछ डिवीजन, लॉजिकल, रीजनेबल, है ना, डिवीजन किया हुआ है। अब इतना डिवीजन होने के बाद भी कुछ क्लैश होता ही है, इश्यूज कुछ ना कुछ होते ही हैं। समझे बात? जहां पे आपको दिखेगा इमीडिएटली सेंटर विल ट्राई टेक कंट्रोल ओवर द मैटर्स और सिचुएशन। सुशांत सिंह वाला केस, स्टेट बोल रहे नहीं हम लोग करेंगे इन्वेस्टिगेट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, सेंटर बोला नहीं हम वो सीबीआई करेंगे इन्वेस्टिगेट। तो उसमें एक क्लैश हुआ था, आपको शायद मेरे ख्याल से वो तो मालूम ही रहेगा कि थैंक्स टू मीडिया, है ना, मीडिया ने आपको बिल्कुल मतलब वो पूरी केस के डिटेल्स, और आपको मुझे लगता है कि तब वो टाइम है ना, हम सब लोगों को मीडिया ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी बना के दिया था, हर घर में इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है ना, वो सुशांत के केस को देख रहा है। मीडिया की बात करना है डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम, बात करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी और फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन उतनी नहीं, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू दैट स्ट्रक्चर, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। आई एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन इन लेक्चर्स। कौन सा स्ट्रक्चर? ये यूनियन और स्टेट में बोला आइडेंटिकल दो लेयर्स हमने बना दिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। सो इश्यूज एंड चैलेंजेस, सो आवर फोकस और आवर इंटरेस्ट इज इन दीस इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग, यू नो, in operational dynamics of these two layers of government. समझ में आ रही बात? everyone. जैसे सेंटर ने क्या किया रिसेंटली, पंजाब और वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, ये दोनों स्टेट, वेस्ट बंगाल के इधर बांग्लादेश के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड रूल्स के हिसाब से 10 किलोमीटर फ्रॉम दैट बॉर्डर, एक्चुअल बॉर्डर, दैट एरिया शुड बी गार्डेड एंड शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ बीएसएफ। दोनों जगह पे हमारे पास बीएसएफ, रिसेंटली उसका एरिया बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। तो दोनों भी स्टेट इमीडिएटली दे स्टार्टेड शाउटिंग, नो दिस इज इंट्रूजन, इंटरवेंशन ऑफ सेंटर इन आवर डोमेन। अब देखो सेंटर को लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है। स्टेट को दिखता है कि मेरा टेरिटरी चला गया 50 किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर को पूरा, अब यहाँ पे मेरा रूल नहीं चलेगा, मतलब मेरे, लेकिन हो सकता है कि नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है कि नहीं, ये वो बात करेंगे हम लोग, लेकिन देखो इशू बन गया यहाँ पे। समझिए बात, करते हैं आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये फोकस होने के लिए और ये चीज समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सी इशू किसके साथ है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट किसके पास है और उसका स्कोप क्या होगा। तो इसीलिए बेसिक्स पहले पढ़ के आप न्यूज़पेपर को उसको अगर लिंक कर पाओ, है ना, तो आप बिल्कुल एकदम सही ट्रैक करोगे। समझ में आ रही बात? अब देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट दोस वीडियोस एंड मे बी द कंपाइलेशंस, लेकिन कैसा ना कि आप वीडियो कितना 1 आध घंटा या फिर 1.5 घंटा वगैरह देखो, उतने टाइम में आप बैठ के पढ़ो ना न्यूज़पेपर। आप जितना भी कुछ आपने पढ़ा है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त प्रोसेस होता है, यू गिव योर ब्रेन अ टाइम टू प्रोसेस इट and link it with what is going on or what is happening in current affairs. इसलिए बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि this all is about processing and not just reading or writing down notes or maybe solving question papers. No, it is more about processing. More you process, more better your brain will be, more dynamic it will be, and more correct will be your answers. समझ में आ रही है बात? Right. So उसके बाद हमने कुछ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और हमने और एक लेयर बना दिया। ये जो दो लेयर है, एक सेंटर में, एक स्टेट में, और एक बना दिया हमने लोकल लेवल पे, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, राइट? एंड व्हाट these institutions are doing same thing as the state and central level institutions doing. They have got their own jurisdiction, their own area of activity and functions and responsibilities, and maybe some powers also.
So they try to execute their responsibilities at local level. आप देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, devolution of power and finances at local level. Devolution मतलब जो लोकल लेवल है वहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को पहुंचाना, वहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को तैयार करना और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज वहां काम करेंगे जहां पे हमने बनाया पंचायत, जहां पे हमने बनाया ग्राम सभा, जहां से लोग एक साथ आते हैं। देखो पंचायत में अगर आप देखोगे वहां पे तो एट लोकल लेवल ग्राम सभा इज पब्लिक बॉडी, right, where representatives of that particular village will come, sit and will question and investigate as well as decide priorities for developmental work in that particular village, and accordingly the panchayat is expected to do. This is what is ideal scenario. तो ये हमने क्यों तैयार किया? क्योंकि हमने सोचा कि डेमोक्रेसी को आप आगे चलने की जरूरत है। रीजन तो हमारे पास है, लेकिन रीजन के बाद हमारे पास लोकल एरियाज भी है जहां तक हमें शायद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को और ब्रॉड करने की जरूरत है, लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मौका देने की जरूरत है। तो हमने इसलिए फिर लोगों से ग्राउंड एजेंसीज तैयार की। लेकिन अब ऐसा है ना कि आप सिर्फ एजेंसीज तैयार करो और ऊपर से सेंटर से या फिर स्टेट से उनको डायरेक्ट करो कि इस तरह का काम करो, उस तरह का काम करो, तो कोई मतलब ही नहीं। ये रिप्रेजेंटेटिव एजेंसीज है जो आप देख सकते हो लोकल लेवल पे, जहां पे इलेक्शंस होते हैं, पता है इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस महाराष्ट्र में देखो अभी पंचायत इलेक्शंस की बात चल रही है। तो इलेक्शंस क्यों करते हैं हम लोग? अगर एजेंसी सिर्फ बनानी है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कोई हो सकता है हर विलेज में काम करा देगा। हमने क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई? इसलिए क्योंकि लोगों को पार्टिसिपेशन का फील आए, पार्टिसिपेशन का सेंस आए। Participation empowers you or people democratically. They understand how to participate, how to use the authority, and how to contribute in decision. And they get sense of belongingness to this system. समझ में आया? इस पे हमने बोला अब किस हद तक हम लोग ये प्रैक्टिस कर पाए? What extent could we bring it in reality on something which is on paper and something that is on ground? इसमें काफी अंतर है, बहुत सारे इश्यूज है उसमें, तो हमें वो इश्यूज को भी देखना। बात समझ में आ रही है कुछ? एवरीवन, तो वो इश्यूज को भी हमें देखना। देखिए मिड डे मील्स किसी स्कूल में मिड डे मील्स की जरूरत है कि नहीं है, वो लोकल लेवल बॉडी नहीं डिसाइड करती, वो सेंटर ने बना दिया मिड डे मील स्कीम, सभी स्कूल्स हर एक विलेज में अपना मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं, है ना? तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि whether it is required there or not, right? And who would give those inputs then? Yes, who would be giving those inputs? Of course, the local people from that particular region would be giving inputs. समझ में आ रही है? जैसे देखिए, अगर हम लोग सेक्स रेशियो को देखें और सेक्स रेशियो हमें बिल्कुल इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी बनाई है और हमने पॉलिसी बनाई और उसमें कुछ एलोकेशन ऑफ फंड्स एलोकेट कर दिए, तो बोला कि केरला में बिल्कुल सेक्स रेशियो इंप्रूव होना चाहिए। अब कितना और इंप्रूव होगा वहां से? पहले से 1000 नंबर होगा। बात समझिए कुछ आपको, है ना? तो कुछ पॉलिसी जो हम लोग पैन इंडिया देखते हैं वो लोकल लेवल पे इरेलेवेंट हो सकती है ना? तो उसको रिलेवेंट बनाने के लिए हमने फिर बना दिया ये, जहां से इनपुट आएंगे। अब कितने आते हैं कितने नहीं, इसकी बात करेंगे डिटेल में सिलेबस का ये पॉइंट देखिए। इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर यूपीएससी क्या करेंगे? यूपीएससी keeps asking questions, interesting. There is something called as Finance Commission of India, constitutional agency under 280 of the Constitution. Finance Commission has been constituted, or it is to be constituted every 5 years. इसका क्या काम है? तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली gives recommendation on how these local self-government agencies to be empowered financially, being more particular. And UPSC has been asking questions on exactly this point. देखो, devolution of powers and finances लिखा हुआ है, फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल, ये पॉइंट पकड़ा है इसमें। तो वैसे बोला कि फाइनेंसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। कैसे क्वेश्चन पूछे गए? तो 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को कंपेयर, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम 14th और अर्लियर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस। यूपीएससी कभी नहीं उसके सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछता, हर क्वेश्चन आप सिलेबस से लीड कर पाओ। करते कभी? अरे वो लीडिंग दिस एवरीवन। नेक्स्ट, yes, now here comes idea of separation of powers. Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. Now what do you mean by separation of powers? Basically, under constitution deals with three major aspects of governance, तीन इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ गवर्नेंस। एक इसको बोलेंगे हम लोग लॉ मेकिंग, रूल बनाने का काम, लॉ मेकिंग। दूसरा है वो लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का। तीसरा है ये प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है या फिर प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो लॉ मेकिंग या फिर इंप्लीमेंटेशन, इसमें से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, है ना? कुछ इश्यूज क्रिएट, तो वो इशू को एड्रेस करने का ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस होते हैं।
और ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स को देखने के लिए 3 जुरिसडिक्शंस या 3 डोमेन्स को देखने 3 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए, right? The first task would be taken care of by the legislatures, which is popularly known as Parliament of India at national level, and at state levels you have assemblies, right? Second, that is implementation, execution is a task of executives, right? So at national level you have President of India, Prime Minister, and his council looking after execution, of course, and permanent executives, right? IS officers and all. And then third, at state level also you have got executives, governor, CM, and his council, and then secretariat at state level. And third is judicial, Supreme Court, High Court at state level, and then subordinate courts in instance. Right? So these, broadly speaking, these are 3 important domains of governance, and these are taken care of by 3 important organs or systems under constitution. We have executive system, we have legislative system, and judicial setup or judicial system. Now their areas of activities have been kept separate, fairly separate, not rigidly separate. Right? There are areas where they overlap, right? But then the efforts have been taken to keep them as separate as possible. As separate as possible, to ensure that there is no concentration of powers or authority in one single organ of the state. Because when you concentrate power, that results into chaos. Division, separation results into an orderly execution of responsibilities given under law. काम सही से हो सकता है लोग को सही से डिवीजन करके किया जाए, इसीलिए ये 3 ऑर्गन्स हमने बनाया, एक जुडिशियल, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है लेजिस्लेटिव। समझ में आई बात? जो लॉ बनाएगा अगर वही एग्जीक्यूट करेगा और वही जज बन के बैठेगा तब तो आप समझ रहे हो क्या होगा। तो उसका एक एग्जांपल हमारे पास है ही हिटलर। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो there would be chaos, there would be arbitrariness, है ना, बराबर? And to avoid that arbitrariness in governance, chaos in governance, we have a constitution which defines the limits of each and every organ of the state. ये सभी जो एजेंसीज हैं, इनका लिमिट डिफाइन करता है, इनका जुरिसडिक्शन डिफाइन करता है, और ये डिफाइन करके क्या करता है, इन्हें ऑर्डर लाता है। आप इतना ही काम करो, इसी तरह से करो, वो आपका काम नहीं है और ये आपका काम। क्यों ऐसे डिफाइन किया है? Just to see to it that doesn't result in chaos. बताएगा? So dispute redressal mechanism, as I said, you have judiciary, you have got number of tribunals also. Must be knowing about tribunals, right? Mike, what a dispute tribunal like that? Have you heard about what a dispute tribunal? Or maybe National Green Tribunal, Company Law Tribunal and all. So there are several such tribunals or tribunals, right? They also look after some of the judicial matters pertaining to dispute redressal mechanism. You must have definitely heard about something called as consumer court. Consumer court. क्या करता है? Disputes pertaining to or related to consumers, right? उसको resolve करने का काम करता है। समझ में आ रही बात? So all such dispute redressal agencies fall in this particular, or they are part and parcel of this particular body, and such institutions also, the legal institutions. Hello, sir. Everyone. And UPSC is fond of asking questions on this, and they ask questions which are bit of a higher level of understanding. But then once we understand the concept, and then when we will discuss in the lectures, we'll get to know like to what extent we need to study this. That is about union, state, and ideal separation. Yes, now here we have parliament and state legislature. This is a separate topic under yourself. So, under this point, you will have to study structure, functioning, and conduct of business of state legislature as well as central legislature. So, central and state legislature, unka structure, unka function, conduct of business, powers, privileges, and issues that are in the public. You will have to study. So far as structure is concerned, it's comparatively easy to understand. Functioning, little bit difficult than structure. Conduct of business is further more difficult than the functioning. And when it comes to issues pertaining to powers and privileges arising out of, or maybe issues arising out of powers and privileges of members of the parliament and state legislature, are a little more complicated. But they are very interesting. Though they are complicated, they are interesting. Like when it comes to structure, you will say that Rajya Sabha, Lok Sabha, and President forms parliament. There are different officials working in the parliament.
to make parliament function in a harmony. Then functioning of the parliament, there are different rules in the constitution. In fact, there are provisions in the constitution which govern some part of functioning of the parliament. And there are rule books of Lok Sabha and Rajya Sabha separately, which also govern the functioning of the parliament. So do we need to go through the rule books then? No, we don't. But if at all there is something in news, as was the case with state legislature of Maharashtra, there was the issue of the speaker and deputy speaker and bill. It was issued recently. There were articles in newspaper pertaining to the same. Right? Our interest is in that because that deputy speaker or speaker is an officer of state legislature, right? Who is basically looking after the business of state legislature. So देखो, बीच में कुछ ऐसे भी बात हुई महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर में कि कुछ एमएलए थे, they were suspended for indefinite period. And they filed case in Supreme Court. यार हमको बिल्कुल मतलब इन्होंने आने से मना कर दिया, आप बताओ क्या जाना नहीं? Supreme Court ने स्पीकर को पूछा कि आपने कैसे ऐसे किया? Speaker says that is my constitutional authority to do so. The Supreme Court said that no, it is not absolute. You cannot indefinitely suspend them. Your power has got certain reasonable restrictions. तो उनको बिल्कुल वापस दे दो. स्पीकर के पास कोई उसका ऑप्शन नहीं. देखिए मैं अब वो आए तो आने के बाद ये सब कुछ कर दिया. So the point here is आपको देखो न्यूज़ पेपर में पढ़ोगे यही न्यूज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ इसका पॉलिटिकल डिस्कशन भी आपको काफी सारा मिला रहेगा. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्यों दिया, कौन कहाँ किससे मिला, सीक्रेट मीटिंग किया होगा. That is not our part of syllabus. हमारा सिलेबस क्या है? एंटी डिफेक्शन. हमारा सिलेबस क्या है? स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है. बस समझ आया जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है. अब कल को समझ लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि those members who are defected are disqualified under 10th schedule, तब तो और एक इशू क्रिएट होगा. Now what next? There is a chance probably they may be disqualified. This is my understanding. Let's see how what and how Supreme Court finds the way out of it. But still, the matter is, even if they are not disqualified, still there are going to be issues. बस अगर सुप्रीम कोर्ट इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, तो भी इश्यूज होंगे. सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले वाले जो जजमेंट्स है, ये तो ओलन बिंग मोर पर्टिकुलर, राइट? तो आपको ऐसे दिखेगा कि वो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द लॉ व्हिच विल प्रोहिबिट सच डिस्क्रिमिनेशन. ये लॉ होने के बाद भी लगभग हर स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोहिबिशन देगा और पार्लियामेंट में भी. तो फिर लॉ बनाएंगे यूजलेस है ना. फिर उसको अगर हम इतना कन्वीनियंटली जैसे चाहे यूज करेंगे तब तो लॉ यूजलेस हो जाएगा. If they are not disqualified, these members those who defected from the original party, if they are not disqualified, that is most probably going to create new ground for other members to defect. But देखेंगे आगे honorable court will decide the matter. It is sub judice, so I should not be commenting on this. But our interest is in that you are going to face a question on this issue, not on the matters which are political. We have nothing to do with which party defected, which members and which party will come to power, which will not. Our interest is whether all those processes which were followed, whether they are within the scope of law or not, because there is rule of law. So if that law exists, right, whether these activities are or can be considered as legal, can be considered within the scope of the existing law. So everyone, right? So that is where you have to उस तरह से देखेंगे हम जब लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट में. So then next powers and privileges. अच्छा इसमें तो बहुत सारे इशू लगभग इससे पहले तो लगभग रोज होते थे. अब थोड़े से कम. मैंने एक वो एग्जांपल दिया था. एक हमारे पास महाराष्ट्र में मतलब न्यूज चैनल है जो बहुत ज्यादा बात करते होते हैं. न्यूज एंकर कुछ ज्यादा ही मतलब आउट ऑफ जितना बोला गया उससे ज्यादा ही कुछ बोल देता है. उनको बोला गया नहीं कि खुद ही डिसाइड करते हैं क्या बोलना है. कुछ न्यूज मतलब कुछ एपिसोड में कुछ ज्यादा ही बोल दिया मतलब बहाना में बह जाता है. इसका बन गया इशू. तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में एक्शन इनिशिएट किया डालिए जेल में ज्यादा बात करने की वजह से. बात करने का फ्रीडम है ना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जेल में डालने वाला क्या तरीका है? तुम जेल में. तो उन्होंने बोला कि हमारे जो प्रिविलेजेस है ना
कौन बोल रहा है ये? जो स्टेट लेजिस्लेचर, कोई तो स्टेट लेजिस्लेचर था, वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला हमारे प्रिविलेजेस वायलेट हो गए, तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे हम, रिपोर्ट डाला गया जेल में। तो वो स्टेट का जो हाईकोर्ट है उन्होंने बोला सही है, बिल्कुल जेल में डाल दो। ये हाईकोर्ट में नहीं डाल दो, हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, जेल में रहना चाहिए। फिर ये माने नहीं, ये इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में डाल दो। कैसे मान, ना जाने कैसे सुप्रीम कोर्ट में एकदम जट से ले लिया केस इनका। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ नहीं, जेल में नहीं डालना, छोड़ दो इनको, इनको बोलने की आजादी है। और ये बोला गया, वो जो कोई स्टेट लेजिस्लेचर था उसको ये बोला गया कि आप ये बताओ कि आपने इनका एक्शन क्यों लिया, बाय व्हाट ऑथोरिटी यू टुक एन एक्शन अगेंस्ट हिम। इसका एक्सप्लेनेशन स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्सप्लेनेशन तो दिया, सुप्रीम कोर्ट वाजंट सैटिस्फाइड विद दैट। और इसकी काफी सारी इशू, ये तो मैं आपको एक बताया शायद जो आपको बिल्कुल समझा रहेगा, मैं किसी बात कर रहा हूँ इंटेंशनली नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बस आइडेंटिफाई करो, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या है इसमें इशू क्या है। इशू ये है कि मेरी बात करने की आजादी और किसी स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड डिग्निटी, इसमें जब क्लैश होगा तो वो इशू क्रिएट होगा। हमारा फोकस ये क्लैश जहां टेक्निकली स्पीकिंग जहां क्लैश क्रिएट होगा वहां हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि कौन एंकर है, कौन सा था, क्या बोला गया, इसमें इधर से क्या रिप्लाई आया, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कोप में बता रहा हूं आपको कैसे देखना है इसको, राइट। सो पार्लियामेंट ऐसे बहुत सारे केस पर मतलब हम लोग बात करेंगे, लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी आज मैं आपको सब नहीं बता सकता। नाउ पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये अब दिस इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद एग्जीक्यूटिव, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये एग्जीक्यूटिव की बात करता है एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट टाइप। सो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब इसमें क्या 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 पढ़ोगे आप? अगर हमें क्या पढ़ना है इसमें? सो इफ यू लुक एट the syllabus, it talks about structure and organization and function, methods, the way they work, how the departments of government being organized or arranged, or ministry is arranged. Does it make any significance or any sense having such ministries or number of ministries and departments? Is it useful or does it play any role in executing responsibilities successfully and thereby streamlining the process of governance? इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इसमें तो पूछा ही है, लेकिन हमें इसमें पढ़ना क्या है? हमें सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को देखना है, उसके अंदर क्या क्या है वो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद अभी, लेकिन हमें बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए कि क्या रैशनल है इसके पीछे। अगर प्राइम मिनिस्टर इतने इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना सभी मिनिस्ट्रीज और सभी रिस्पांसिबिलिटीज प्राइम मिनिस्टर के पास ही देना चाहिए। प्राइम है ना मिनिस्टर, नहीं वो तो मिनिस्टर ही है एक्चुअली, हमने बोल दिया उनको प्राइम, तो बाकी मिनिस्टर सब प्राइम होंगे, तो प्राइम नहीं है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी नहीं है कोई, है ना। But then you will find that these ministries and departments of the government of India, the way they have been organized, there is some logic behind it. And UPSC you will find asks questions on that logic. समझ में आ रही है? जुडिशरी ये तो अभी चल ही रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगभग हर पब्लिक स्पीच में, हर पब्लिक स्पीच में नहीं लेकिन काफी बार आपको दिखेगा कि वो अभी कॉन्फ्रेंस था, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर्स, ये सबका कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी नॉट लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्टर जस्टिस इन लॉ, देन प्राइम मिनिस्टर, they all were present, and chief justice of India gave a speech जिसमें उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर जो है ना सभी चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस स्पीच दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर बैठे हुए, ये रिप्रेजेंटेटिव्स है ना लेजिस्लेचर। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर्स मस्ट मेक लॉज which should not result into disputes. Your law making process is faulty and that results into overburden on judiciary. सभी चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या बात है यहाँ भी जुडिशरी की रोल की बात है। तो जुडिशरी बोल रहा है कि हमारे ऊपर बर्डन हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा पढ़ो तो कम से कम पास करते हो, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम प्रोसेस तो फॉलो करो जो दिया हुआ है ना। मतलब ये मैं आपको अभी एकदम
ये सभी चीजें ब्रीफ में बता रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि हमें देखना क्या है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी बता नहीं पाऊंगा इतना डिटेल। सो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, तो फंक्शनिंग है ना, फंक्शनिंग में ये चीजें हैं, क्योंकि जुडिशरी का काम है ना डिस्प्यूट रिड्रेसल, है ना, जुडिशरी का काम। स्ट्रक्चर कैसा है जुडिशरी, तो आप देखो वहां पे सुप्रीम कोर्ट है सेंटर में, हाई कोर्ट्स होते हैं लगभग हर स्टेट में, उसके बाद स्टेट के बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में एलॉबरेट जुडिशियल सेटअप है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशियल सेटअप बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल। तो ये सेटअप इसके अपने कुछ इशू है, डिले जुडिशियल प्रोसेस में होने वाला डिले, पेंडिंग ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जुडिशियल करप्शन, जुडिशियल रिफॉर्म की बात की जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं, करप्शन इन जुडिशियल की बात करते हैं। So all these issues are basically issues of our interest when we are looking at this particular part of space. So then, everyone. Then there is something called as pressure groups. Pressure groups. Formal and informal association. क्या 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 कौन होते हैं pressure groups कौन? आपने कभी देखा pressure group होगा? बिल्कुल आपको मालूम है, अगर मैं बताऊं आपको, बिल्कुल pressure group पता चलेगा। ये फार्मर्स है ना, फार्मर्स लगभग 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल वो बैठ के देवर प्रोटेस्टिंग, राइट, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉस, मालूम है सबको। देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए आल्सो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रोटेस्ट चला बिकॉज़ ऑफ कोरोना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन अदरवाइज प्रोटेस्ट डेफिनेटली था। फार्मर्स आल्सो कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट एंड अल्टीमेटली forced government to withdraw the laws. The farm laws have been withdrawn. Now the question is like our interest at this moment is not whether the two laws were good or bad. ये बात नहीं। देखो यहाँ पे फार्मर्स एक साथ आए, 1.5 साल एक साथ उन्होंने काम किया और गवर्नमेंट से उन्होंने वो चीज करवाई जो उनको चाहिए। प्रेशर ग्रुप का एग्जैक्टली यही काम है। They will pressurize institutions of governance and make them work or perform the way the members of the pressure group want. And from where exactly they come, like अब कहाँ है वो फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप का? अब तो नहीं प्रोटेस्ट कर रहे किसी चीज के लिए, क्यों? फार्म के इश्यूज सब कुछ खत्म हो गए? नहीं। At that time their objective was very clear, and what was it? Repealing the farm laws, and the farm laws were finally repealed. Right? Everybody. In similar manner, you will find that such pressure groups keep working. Pressure groups working for women reservation, right? Working for children and their safety. Working for traders and their concerns. GST जब आया, GST के बाद बहुत सारे traders जो हैं, businessmen जो हैं, they were on the streets opposing GST, नहीं चाहिए GST। कुछ भी कारण में नहीं जाएगा, लेकिन वो एक साथ आए, फिर उसके बाद GST के रेट्स में और उसके टैक्स रेट में, टैक्स लाने में बहुत सारी चीजें थे, बहुत बार इतने सारे गाइडलाइंस थे, मतलब GST काउंसिल के सॉरी हाँ, सो इतने सारे गाइडलाइंस है कि शायद उनको भी नहीं पता रहेगा कि कौन सा गाइडलाइन कब दिया। लगभग नोटिफिकेशंस इतने आए हुए, जब 2016 के बाद अगर आप देखोगे इतने नोटिफिकेशन आए हुए, लगभग हर महीना एक नोटिफिकेशन, तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो फिर आगे जीएसटी के अगेंस्ट, तो बात अलग है कि जीएसटी भी है, लेकिन जीएसटी के रेट्स में काफी सारा रिवीजन, काफी सारा बदलाव। तो ये क्यों, ये क्या, ये कौन थे और क्यों आए सामने और ये क्या कर रहे थे उस मोमेंट के लिए आपको दिखेगा। तो ये ग्रुप रहेगा सोसाइटी में आपके, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, सेक्स या फिर रिलीजन इसकी बात नहीं होती। यहाँ पे एक कॉमन इशू है, हो सकता है वो रिलीजियस इशू हो सकता है वो सोशल इशू हो सकता है वो पॉलिटिकल इशू इकोनॉमिक इशू, कोई भी इशू का मतलब सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे नहीं इम्पोर्टेंट। ये लोग जो एक साथ आते हैं उनको ये समझता है कि ये इसमें मेरा इंटरेस्ट, तो एक साथ आएंगे। जैसे फार्मर्स को आपने देखा, आप देखो वहां पे कौन से रिलीजन वाले सिर्फ फार्मर्स, ऐसा कोई आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे, सब रिलीजन नहीं। कास्ट नहीं, कास्ट बोलते थे पैरामीटर फॉर कम्युनिटी, राइट। जेंडर तो जेंडर बोलते थे पैरामीटर फॉर कम्युनिटी। आपको बात समझ में आई? देन व्हाट वाज इट? It was basically the farm law and the reforms they wanted in agricultural sector. तो वो उनको एक साथ लेता है, समझ में आई बात? Everyone. This is how pressure groups work. अच्छा, by the way, why this point is there in this case? What is so important about it? These pressure groups basically help in broadening the scope of democracy, making your democracy more functional, more accessible. तो समझ में आई कैसे? चलिए बात करते हैं। अब देखो ये है फार्म लॉ वाला इशू।
जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया वो प्रोटेस्ट इलेक्शन में कर देते हैं, तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोटिंग करेंगे, उसको 5 साल शायद वेट करना है ना। और हो सकता है तब तक शायद ये सब लोग इस तरह से एक साथ आके अपने इंटरेस्ट के लिए एक ही तरीके से वोट नहीं कर रहा है ना। तो इन्होंने क्या सोचा, चलो एक साथ आते we will fight. Now those who are not represented, those who are individually cannot be or won't be heard properly, right? They formed a group and they became strength for each other. And that public space is used by public, to get things done from public institutions. ये important है। इलेक्शन की जरूरत नहीं है, आपका गवर्नमेंट में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। ये एक साथ आके गवर्नमेंट से या फिर वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव, देखो इलेक्शन तो करवाया नहीं, इन्होंने वोट भी किया रहेगा इलेक्शन के वक्त, सही है गलत, फिर भी उन्होंने बोला नहीं हमने तुमको बिल्कुल इलेक्शन में वोट करवाया, जिताया भी, तुम यहाँ पे बैठे हो लेकिन हमारी बात नहीं कर रहे हैं, अब तुमसे वो चीजें मनवाएंगे हम लोग जो हमें चाहते हैं। तो लोग अब एक साथ इस तरह करते, तो क्या इंस्टीट्यूशंस का रिलेवेंस खत्म हो गया? नहीं, इंस्टीट्यूशंस का रिलेवेंस तो है ही है, लेकिन उसका अब पब्लिक ओरिएंटेशन, पब्लिक नेचर शायद कम हो रहा है, उसमें शायद वो आपका पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट और आप और आपके इंटरेस्ट, इसमें शायद गैप ज्यादा है, इसमें वॉइड ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए इफ पार्लियामेंट कैन नॉट कम एंड और दैट those representatives cannot come and actually represent you, then you are moving as close as possible to the parliament, holding them responsible and asking them to do things which are necessary for your interests. तो वहाँ पे प्रेशर का रोल है, इसको डिटेल देखेंगे हम लोग, लेकिन आप बस उसको आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना यहाँ से आगे, तो वहाँ पे देखना कि क्या कहीं एनवायरमेंटलिस्ट है ना, एनवायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, नहीं क्या ये बचाओ, क्या बचाओ, एनवायरमेंट को बचाओ। अच्छा किसकी इंटरेस्ट की बात करते हैं? आर्य फॉरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ पहले बात न्यूज़पेपर में आई आर्य फॉरेस्ट, तो ये आप समझ में आ रहा है आपको, ये क्यों ऐसे होता है? अच्छा ठीक है, ये जो लोग बोलते हैं कि एनवायरमेंट सेफ एनवायरमेंट, वो एंड वो इंटरेस्ट आर दे टॉकिंग अबाउट पब्लिक, है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये प्रेशर ग्रुप फिर काम कर रहा है उस तरह से, आपको लग रहा है रिलेवेंट है डेमोक्रेसी में? अभी कोई रिलेवेंट जरूरी नहीं है कि आपका इलेक्शन, जरूरी क्या मतलब होता ही नहीं है इलेक्शंस, आपका एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, है ना, फूड सिक्योरिटी, इन चीजों पे आपका इलेक्शन होता ही नहीं है। इलेक्शन किन मुद्दों पे होता है आपको मालूम है? आई डोंट नीड टू रिपीट दोस, कुछ यही बनेगा वही बनेगा, इसी के ऊपर लोग चल रहे हैं, नहीं मालूम है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में इलेक्शन कौन बात, कोई नहीं बात कर। तो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट एक कॉज ऑफ कंसर्न नहीं हो सकता पब्लिक के लिए? क्या हो सकता है ऐसे कि कोई यंगस्टर्स है, चलिए इंजीनियर्स को पकड़ते हैं, सब इंजीनियर्स एक साथ आके बिल्कुल उन्होंने एक फ्रंट बना लिया या प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें जॉब दो, हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल। तो ये हमें जॉब मतलब ये हम मतलब कौन है? क्या ये कोई एक कास्ट था, कोई क्रीड है, कोई एक रीजन से आता है, कोई रिलीजन प्रैक्टिस करते नहीं, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट। जिस दिन मिल जाएगा, जिस वक्त मिल जाएगा, उस वक्त immediately you will find that the movement stops. But for that time span, that particular point of time, you will find that they hold institutions responsible and they force them to work for their interests. कळतंय का सगळ्यांना? That is role of pressure groups, formal and informal associations in politics. Now, formal informal क्या होता है? ये देखो ये NGOs, self-help groups, donors, charitable trusts, various groups and so, ये सभी informal agencies हैं. All these are informal agencies. If you look at this particular point, formal and informal associations and their role in politics, है ना, NGOs, do they play some role in polity or do they play some role in governance? बिल्कुल role play करते हैं. They are playing prominent role, बहुत important role. Pani Foundation, I think, is it not playing role in governance? Of course it is. But is it the government? No, it is not the government. Is it a formal institution, registered institution? Probably not. Even if it is registered institution, it is not government, that's for sure. बराबर? मिड डे मील स्कीम अक्षय पत्र बंद होता है बहुत सारी जगहों पे, तो क्या वो गवर्नमेंट का एजेंसी? नहीं, वो बेसिकली एक इनफॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एनजीओ को समझिए बात। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बचत गट, basically they are self-help. What do they do? They create new economic opportunities and alternative source of employment for poor and agrarian families. So what are they doing? Basically, they help
in mobility of resources in favor of those who are poor, in favor of those who are vulnerable. Religious poverty, for example. आप देखो वहाँ पे employment किसको मिलता है? Those who are displaced because of development projects, those who are vulnerable, those who are poor, they are employed. Particularly women are employed in religious poverty. अगर आप देखो, now it has become cooperative industry for example. But then earlier it was self-help group, a छोटा सा organization. चालू हुआ, आज देखो क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना काम किसका? वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आर हेल्पिंग गवर्नमेंट इन इट्स टास्क और इन इट्स ड्यूटीज. जब कोविड जब था तो आपने देखा बहुत सारे वॉलंटियर्स आए, दे हेल्प गवर्नमेंट टू execute the responsibility, not government to say, but then this is how informal associations contribute in governance. Must have came across the news that Tata's have donated huge amount of sum in the effort to uplift the health system or health infrastructure in India. टाटा को क्या पड़ा है भाई? गवर्नमेंट देख लेगा टैक्स कलेक्ट करके जब भी आने वाले 10, 50, 100 साल में हेल्थ सिस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, देखा जाए. टाटा ने बोला आई विल वर्क एज अ डोनर, डोनेट किया. Now this is contribution in governance. So we have to under this topic. ना इसमें हमें डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें ये भी ये इस तरह की सभी एजेंसीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस. समझ में आएगा? How many of you are aware about new law that has been passed by central government? FCRA has been सुना है? Foreign contribution. अच्छा चलिए कोई बात नहीं. NGOs तो मालूम है ना. और ये NGOs आपने देखा है बहुत बार कॉल आता है ना, अच्छा हमारी ये एक चाइल्ड है, इसकी परिस्थिति ऐसी, आप डोनेट करोगे तो पैसे. From where do they get the funds? They collect this way. And who are their sources then? All donors, maybe individual or maybe institutions. समझ में आ रही बात? Everyone. So when we look at role of these agencies, role in quality of pressure groups and formal and informal associations, these formal and informal associations include all these things. डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला स्लाइड में बताता हूँ आपको. ये जो लिखा हुआ है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री, ये सभी जो एजेंसीज है यहाँ पे, ऑल दीस एजेंसीज आर बेसिकली इनफॉर्मल एजेंसीज. देखो इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, हम सब लोग स्टेक होल्डर है डेवलपमेंट प्रोसेस. वी आर प्रोबेबली सम ऑफ अस आर एट द रिसीविंग एंड एंड अदर्स आर एट द गिविंग एंड. दोस हु आर सर्विंग द सोसाइटी आर एट द डिलीवरिंग एंड, whereas those who are at the receiving end are beneficiaries of this. है ना? समझ में आ रही बात? जैसे कोविड के टाइम में देखो बहुत सारे लोगों ने अपने घर से किचन में खाना बना के पेशेंट्स को सप्लाई. Now the patient becomes or is the beneficiary of that activity. This was done voluntarily. समझिए बात? ये ऐसे छोटे-छोटे अब तो नहीं है, वही are they running the same kitchen again for delivering the food to all the hospitals now? No, they are not. That time it was required. So people voluntarily stepped in. They provide the service. Right? This is something called as voluntary action. So development process and industry, हमें ऐसे ही pressure groups, formal and informal associations, organizations, donors, charitable trusts, है ना? उसके साथ NGOs and self-help groups, they all contribute. They all contribute along with government agencies to maintain the standard of governance at whatever level, at the level that we experience today. So तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सिग्नल पे कभी देखोगे कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स आप ही के एज के कुछ प्लेकार्ड्स लेके खड़े हैं, हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो. देखा ना? ये तो स्टेट ने बताना चाहिए. अच्छा, स्टेट ने कंपेयर ही करना चाहिए, फिर भी लोग हेलमेट पहनते हैं. अब रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? तो क्या किया जाता है? लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. आपको देखिएगा कि ये एनजीओ इस तरह से काम करते हैं. अब लोग अवेयर होंगे नहीं होंगे बात अलग, लेकिन फिर भी इस तरह से काम करते हैं. बात समझ में आ रही है? आगे है ना? Right. So that was about this slide. Next we have constitutional posts and bodies, appointments, powers, functions, responsibilities, statutory, regulatory and quasi-judicial bodies. ये भी क्या चीज है? तो इसमें देखो आपने you might have heard about Advocate General of State, Attorney General of India, K.K. Venugopal. He nowadays is continuously finding a place in newspapers. मालूम है K.K. Venugopal? Attorney General of India तो मालूम है शायद. नहीं तो कोई बात नहीं. Then Comptroller and Auditor General of India, क्या है? इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल मालूम है ना?
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा कुछ नहीं, यूपीएससी तो मालूम होगा ही नहीं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी क्या करती है, तो वही हमें देखना है इसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं। अभी रिसेंटली जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ ना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला अपॉइंटमेंट के बाद हमें इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया यहाँ से आगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन रूल्स, इलेक्शन वाले रूल्स वो एकदम सही से फॉलो हो। अच्छा बोला तो उन्होंने, देखेंगे इलेक्शन के बाद। आपको पहले वाला एक्सपीरियंस तो रहेगा इलेक्शन का, वेस्ट बंगाल वाला इलेक्शन बहुत अच्छा है, एकदम इंटरेस्टिंगली वो इलेक्शन को हमने कंडक्ट किया। और यूपी का तो बोला ही नहीं, एब्सोल्युटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ना। इलेक्शन होता है ना ट्रांसपेरेंटली होता है कि नहीं होता ही है शायद, मोस्ट ऑफ द स्टेट में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आपको बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैव परफॉर्म सो वेल। देखो इश्यूज तो है हर चीज में, इशू जब बैलेट पेपर था तब भी बैलेट बॉक्स को उठा के लेके जाते थे, बूथ कैप्चर उसी को डायरेक्ट। अब ईवीएम है तो कभी कभी ऑलरेडी रेडीमेड ला के रखते हैं, चलो ये तैयार है उसको इससे रिप्लेस कर लो काउंटिंग में। एलिगेशंस है लेकिन है तो ना, अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं तो एलिगेशंस भी नहीं होते कुछ नहीं। लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सा बटन दबाने के बाद कौन सा वोट कहां काउंट होगा। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इशू है, लोगों को नहीं, आपने भी वोटिंग किया है शायद ये नहीं है, कुछ लोगों ने शायद आपने से वोट किया है, आपको बिल्कुल पता चला कि हां ये बटन दबाने के बाद ये चला गया वोट, अच्छा ये पार्टी तो वीवीपैट वो उसके ऊपर भी बात नहीं बात में किया, जितने वो मिले वीवीपैट वो और जितने वोट है ये मैच नहीं हो रहे। मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश तो बिल्कुल की जाएगी नहीं। तो 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें ईवीएम की इतनी चर्चा हुई, कुछ लोगों ने बिल्कुल बोल के दिखा दिया कि देखो यहाँ पे ना ये गलती है, दिस कैन बी दिस इज द फ्रॉड। यूपीएससी ने सोचा अच्छा ऐसी बात। फर्स्ट क्वेश्चन इन जीएस पेपर 2 वाज ऑन ईवीएम्स, ईवीएम controversy in recent time. Suggest measures how can this election commission improve the trust and confidence of people into this commission. हमने क्या पढ़ लिया, हमने ईवीएम का पूरा मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा ये पूछा उन्होंने कुछ और, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हमारा फोकस कहाँ है और पूछते क्या है ना। मतलब कुछ लोग देखो जैसे करंट से न्यू नोट्स निकालने हैं, जो महाराष्ट्र में चल रहा है ड्रामा, तो आप बिल्कुल नोट्स निकाल दो, अच्छा वो 40 लोगों के नाम ये 40 लोग यूपीएससी मैं बता रहा हूँ यहाँ से आगे 40 साल 40 लोगों के नाम ना बिल्कुल मेरा मेंस में। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आप ना ऐसे इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बिल्कुल आप यहाँ से आगे गाइड करते हैं। डू यू नो दैट मिनिस्टर who defected? I don't. अरे यूपीएससी का एक प्रोफेसर है कि टीचर का एग्जाम देते हैं, वो उतना पूछते हैं और जो अगर आपको चाहिए कि क्या पूछते रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से किसी की बात नहीं सुनना है ना। सो ईवीएम, सो इलेक्शन कमीशन का कुछ रूल है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आपण आचार संहिता काय असते हे न्यूजपेपर मध्ये कधीच नाही वाचलं, आपल्याला काय माहिती आचार संहितेचं उल्लंघन झालेलं आहे, बरोबर। आपण हा विचार केला का की का बरं झालं, मग त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट्स करायला पाहिजे। आचार संहितेचं कारण काय आहे, व्हॉट इज द रिझन फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, right? Whether it has a statutory backing or not, which is the agency which will enforce this particular code of conduct? Is there any disciplinary action to be taken against an individual who violates code of conduct? This is our interest. Samajh very well. And of course, in similar manner, we'll have to look at almost each and every constitutional agency as well as statutory agencies. Statutory agencies, मतलब statutory का मतलब क्या है? OTT platforms, OTT मान रहे हैं लोग, everybody, right? Netflix and Hotstar and all. So now there is an agency called as TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. The regulatory authority, है ना? Regulatory, because the authority or agency becomes regulatory when it is supported by statute. Statute is nothing but law. Statutory म्हणजे काय कायद्याने तयार केलेले. So IRDA, every single regulatory authority is backed by some statute. Always IRDA, RBI, regulatory body. तो IRDA के ऊपर OTT के कॉन्टेक्स्ट में आपको बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, जब आप OTT के बारे में पढ़ोगे, automatically न्यूज़पेपर will come there was some article which talks about powers and functions of IRDA. To what extent can IRDA keep control over OTT platforms and can keep check on the same?
अब आईआरडीए के रोल और उसके कैपेबिलिटीज के बाहर ये इशू था ओटीटी, इसलिए फिर न्यू लॉ बनाया आईटी रूल्स आए ना to regulate OTT platforms. A part of those rules were declared unconstitutional by Bombay High Court. आगे तो एक्चुअली कोई बात नहीं. तो अब OTT एक अभी का इशू है, तो आपको सीधे करके it is in news and you will have to prepare that particular topic, prepare that particular matter. तो IRDA भी उस हिसाब से अपने IRDA की बना सकते हैं. और सर ट्राई IRDA Insurance Regulatory Development Authority again authority. So insurance and insurance related issues. SEBI आपको शायद मालूम है, Securities and Exchange Board of India is also regulatory authority which keeps control over stock exchange and market. समझते हैं? Right. So these are the agencies which we have to study their mandate and their role, functioning, powers and under this topic. So इसमें appointment, powers, responsibilities. इसके बारे में हमें पढ़ना है. आपने शायद ये देखा है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वही सुशांत वाला जब केस हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, ड्रग्स का रैकेट है, ईडी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सभी लगे हुए मुंबई में, यहीं पे सब कुछ मतलब ट्राई होता है. तो देखो एनआईए, सीबीआई, ईडी एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, दे ऑल हैव jurisdiction over that particular issue. These are different agencies. ये काय सांगतो फक्त व्यवस्थित. These are different agencies, right? And they have overlapping jurisdictions. This overlap of jurisdictions creates number of clashes and issues. You will get a question on this overlap and how to resolve this. सिर्फ सीबीआई के बारे में शायद नहीं पूछा गया पहले, सिर्फ एनआईए के बारे में शायद नहीं पूछा गया. शायद अब हो सकता है कि एक इशू क्रिएट हो, we came across the matter that these presence of these number of agencies together at a time is not resolving the matter but making it more complicated. समझे? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बोला नहीं हमें कस्टडी चाहिए होगी, सीबीआई बोला नहीं हमारा काम होने के बाद देंगे, उसके बाद एनआईए बीच में आके बात करो, उसके बाद ईडी भी. तो ये तो कुछ हम लोग देखते हैं ना आसपास, उसी के ऊपर आपको सिलेबस में मेंस के क्वेश्चंस हैं. Just need to be vigilant. So constitution poses and words. NGO self-help groups and all that I have already said. Vulnerable sections. Second one, weaker section of this. Weaker section of this. Politically, socially, psychologically, economically. They all are weaker section. Vulnerable. क्या लिखा यहाँ पे? Welfare schemes for them, right? Performance of such schemes. चलिए बात करते हैं. For example, mid day meal scheme. अभी मैं थोड़ी देर पहले रेफरेंस किया. Mid day meal scheme. किसके लिए बनाया mid day meal scheme? For children, right? So children because of their age are already vulnerable. एक. Second, further addition to their vulnerability would be their economic status, right? And that may not that may compel these children below age 14 to work somewhere and earn bread and butter for their families, right? So instead, government says that don't worry, we will provide food to your children, but send them to schools. Now here, what is ensured? Schooling and nutrition. ये बन गया एक स्कीम जिससे हमने टारगेटेड बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया और हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं स्कीम के लिए. Now comes the question, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम, कैसे परफॉर्म कर रहा है स्कीम? तो देखो आपने शायद कभी देखा ही रहेगा, नमक और रोटी दे दिया बच्चों को मिड डे मील में. अब नमक और रोटी कौन सा उसका न्यूट्रिशन फुलफिल करेगा? नमक रोटी खा के तो हट्टे कट्टे नहीं होंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन, है ना? इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ व्हेन द न्यूज़ केम आउट, राइट? इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ. इसके साथ साथ फिर कौन से इश्यूज आए करप्शन के, इश्यूज आए लीकेजेस के, है ना? बात समझ में आ रही? और बहुत सारे अगर मिड डे मील स्कीम क्या इसको अगर आप गूगल करो और इश्यूज इन मिड डे मील स्कीम और न्यूज़ टाइप करो, आपको दिखेगा बहुत सारी चीजें वहां पे आपको दिखेगी. तो वो स्कीम कैसे परफॉर्म किया जब से हमने उसको रोल आउट किया तब से आज तक समझ लीजिए 1.5 डिकेड और 21 डिकेड, हाउ हैज इट परफॉर्म? क्या रहा उसका परफॉर्मेंस? क्या दोज हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ मिड डे मील इन लास्ट 10 इयर्स और सो, राइट? क्या उनका जो मालनरिशमेंट है वो क्योर हुआ क्या? हमने मिड डे मील से सपोर्ट करने के लिए बड़ी डेफिनेशन दिया. क्या हमने मिड डे मील के साथ स्कूल्स में एनरोलमेंट रेशियो को हम लोग मेंटेन कर पाए? कि ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ? तो ये चीजों का एनालिसिस करके ये आपको सब न्यूज़पेपर में मिलेगा. आपको इस तरीके से बुक की जरूरत नहीं है. न्यूज़पेपर में आता है, बस आपको उसके पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके लिख के रखना है ना? एमजी रहेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कब से रन कर रहा है. तो मुझे लगता है कि जो दोज वर बेनिफिशियरीज ऑफ एमजी रहेगा दे मस्ट बी नाउ रिच, लाइक पॉवर्टी से ऊपर आए रहेंगे. नहीं, हमें नहीं दिखता है. मतलब तो फिर हम लोग एमजी रहेगा रन क्यों कर रहे हैं?
बेसिकली वो एक ऐसा स्कीम है जो आपको बस फूड सिक्योरिटी इंश्योर करे और बस सॉर्ट ऑफ इनकम सिक्योरिटी दैट विल सस्टेन यू, इतना इंश्योर करे। इस स्कीम का फिर एनालिसिस करना चाहिए, कौन से काम कर रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग में, are they imparting some skills to those who are employed in engineering? If not, then what is the use of that scheme? And when we are, that too when we are investing huge amount of money on this scheme. Don't you think so that we need to revive, we need to reform the scheme? Yes. So the questions would be from that perspective. Similar manner, mechanisms and laws and institutions and bodies for the protection and betterment of vulnerable sections. National Women Commission, Supreme Court, basically which they are toothless title. किसी काम करने ऐसे बिठा गए नेशनल वुमेन कमीशन, है ना? After Nirvaya's case, we passed an amendment to the criminal law. तो निर्भया के केस के बाद क्या हमने अमेंड किया लॉ, तो कोई रेप केस नहीं होगा, हुआ तो फिर लॉज मैकेनिज्म्स एंड देयर परफॉर्मेंस समझ में आ रही है? एवरीथिंग what are we looking at? Prohibition of manual scavenging 2013 में पास किया, मैनुअल स्कैवेंजिंग 2013। आज भी आप न्यूज़पेपर खोल के देखो, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मैन होल में क्लीनिंग करते वक्त किसी की डेथ हो गई। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग तो हमने तभी बंद किया था 2013 में, तो लॉ आया था उसको 10 साल हो गए हमारे पास। 10 साल का नंबर निकालो से बात ना, कितने डेथ हुए, राइट? विल फाइंड दैट इट इज इन लैक्स। तो फिर लॉ परफॉर्म नहीं किया कि लॉ में कुछ फ्लॉज है या फिर हमारी इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज है, व्हाटएवर जो भी है वो स्कीम को आपको देखना। Vulnerable कौन है? Vulnerable and schemes and laws and provisions and institutions for them, right? To what extent are they performing and what are they doing? That is our focus. That is our interest. That is the scope of this course. समझते हैं? Everyone. Yes. We also need to talk about health. तो आपको पता ही चला मतलब 2020, 2021, 2019, 2021 and 2020 health system हमारा इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस वक्त इतने सारे लोग, मतलब हमारे पास हेल्थ सिस्टम का एनालिसिस करने की जरूरत, हमें शायद इंप्रूवमेंट्स और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2019 में, तो उसका एनालिसिस पूछा जाएगा, क्या एजुकेशन में हमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, कौन से इंप्रूवमेंट्स, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आनी चाहिए? अभी यूजीसी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी, अभी कमिटी यूजीसी ने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। In similar manner, human resource development, poverty and hunger, देखो ये और इससे पहले जो हमने बात की vulnerable sections, इसको अलग अलग कैसे करना है? बेसिकली अलग करने की बात करना, जब इश्यूज पढ़ोगे ना तो उसको आपको लिंक करना है सिलेबस में। मैं ये बता रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर में इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हो, उसको एनालिसिस पढ़ रहे हो, आप उसको लिंक करो सिलेबस में। क्या मैं सिर्फ ये vulnerable section के पार्ट के लिए पढ़ रहा हूँ क्या, या फिर पढ़ रही हूँ क्या मैं उसको poverty और hunger से लिंक कर सकता हूँ या फिर लिंक कर सकती हूँ? This is how you have to prepare. While you read newspaper, you must keep your syllabus in mind or back of the mind, and only then you will be in a position to prepare it. And not just newspaper, but your books and your notes also. Okay? Everybody. Then yes, we have got other aspects here, governance, but then we will cover this part in the next lecture, which we'll have maybe next week. तब हम लोग एक in brief में वो सिलेबस का पार्ट आपको बताता हूँ और उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे. Now, wait. Before we stop, there are two things which I want to let you know. First, reference. What will you reference? Please read NCERT. There is no excuse for that. आपने पढ़ लिया पहले, बहुत अच्छी बात है, और एक बार पढ़ो। और एक बार कैसे पढ़ना है? पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक नहीं, एक पहला चैप्टर लोगे, उसको 4-5 बार पढ़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। समझ में आई? कोई ऐसे नहीं पढ़ेगा सर पहले से पढ़ लिया हो गया आज तरह। एक बार में अगर समझ में आता आपको, तो आप दूसरा बुक लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक चैप्टर read 4-5 times, same day, maybe in a day or two, and then next chapter. In this manner, you will complete your NCERT. Right? And this is first slot of reading. You are going to refer to NCERTs again after 4-5 months, one more time, because by then you will improve your understanding of subject. And when you read NCERT again, that time you will get new things out of NCERT. It is a gold mine. More you dig, more you get. NCERTs. Apart from that, then for quality of this paper, as I said, it would be better if you read newspaper and link your syllabus to newspaper. But then Lakshmikant is something which people generally refer.
So you are free to use that compilation for it. But for mains, I don't think it is of any use. So for mains, there are different references which we can think about. One of them is Indian Constitution. Indian Constitution, text, context and interpretation. बिपिन चक्रवर्ती ने लिखा हुआ सेज पब्लिकेशन, छोटा बुक है बट इट इज गुड. अभी लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको अगर लेना है जब लेना है. लेकिन दैट इज बेटर बुक टू बी रेफर्ड एज रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एट लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू. जो हमारे सिलेबस में उतना कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को समझने के लिए वो ज्यादा बेटर. उसके बाद नोट्स, क्लास नोट्स पढ़ना. इसके सिवाय आप में से कुछ लोग होंगे शायद if somebody from law background, you can refer DD to management. There is no need of Lakshman. जो लॉ बैकग्राउंड से हैं उनकी बात करता हूँ, सबकी नहीं. अगर आपके पास पहले से डीडी वसूल लिया हुआ और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल उसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर में टिक करके दूंगा. ठीक, लक्ष्मीकांत भी पूरा लेके बैठना नहीं है, कोई बाइबल वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब पहले पेज से आप कोई जरूरत नहीं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से उसको पढ़ेंगे और बार-बार पढ़ेंगे. वो चैप्टर्स को आप शायद वो चैप्टर्स को मुझे लगता है कि आप शायद 20-30 बार भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्पेसिफिक चैप्टर्स फ्रॉम लक्ष्मी, सभी नहीं, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स पढ़ो. आप में से कुछ लोग अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप पढ़ सकते हो. वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बुक सही जा रहा है आपके लिए. वो आप बुक लेके उससे तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बुक्स पढ़ेंगे आपको, नोट्स नहीं पढ़ेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशन. ये समझा कुछ आपको? एवरीबॉडी रेफरेंस बुक जो बोला गया वही पढ़ेंगे आपको. नोट्स जो क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे सबमिते या सीनियरच्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या नोट्सच्या मी अभ्यास करतो. नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने नोट्स निकाले तो आप पढ़ सकते हो, जो भी दिक्कत नहीं. अदरवाइज नहीं करो. बात समझो, एवरीबॉडी एकदम क्लियर. त्याच्यावर परत डिस्कशन होणार नाही क्लास में. आपको लगता है कोई वैलिड और इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपको यू हैव कम अक्रॉस, ब्रिंग इट टू मी. हम लोग डिसाइड, मैं बताता हूं आपको पढ़ के whether you need it or like you can read from that or not. मतलब एवरीवन मार्केट में से कोई मटेरियल नहीं होता. अगर आपको सच में पढ़ना है, अगर आपको इफ यू जस्ट वांट टू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड दो चार चीजें मालूम होनी चाहिए, कुछ भी लिख के आएंगे, इस तरह का एटीट्यूड है तो आप जो चाहे. आई एम वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. You read authorities and not the laymen on the constitution. There is layman may not be able to convey the same thing which the authorities can. Concepts special समजून घ्यावे. आणि आणखी एक बात, while you are studying this constitution, you are going to come across some difficult some issues, not difficulties as such, maybe sort of a challenges. You may find some words to be really weird. ऐसे मतलब ये क्यों यूज किया वो? And words matter a lot in GS level. Constitution being voted, बहुत important है words. तो words और concepts के ऊपर clear focus में. English language में ये पढ़ते वक्त हो सकता है आपको उतना comfortable ना लगे. Initially, give yourself time. Maybe of a month or 2, 1-2 महीना पढ़ो आप उसको, खुद को हैबिचुअल करो. वो वर्डिंग, अरेंजमेंट, मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके कंसेप्ट्स, इससे हैबिचुअल करो. और उसके बाद आप टेस्ट करो कि आपको ये सब्जेक्ट में सच में डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है. इजी और डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कैन यू मैनेज टू वर्क विद दिस. सी अल्टीमेटली यू विल हैव टू देना. अगर मेंस है तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं. लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको लगेगा की सर हे सगळं नवीन आहे, म्हणजे मला असं काही माहिती नाही, मला काही कळत नाही. लगेच नाही कळलं. कळलं सरांनी शिकवलं पण काही कळलं 2 तासात. मग मी शिकवल्यानंतर 2 तासात मला कॉन्स्टिट्यूशन कळायला लागलं. तर मग आपण आपली डेमोक्रेसी अशी नसतीच म्हणजे जे आता आहे. कळलं? कळणार नाही असं नाही. एक्झाम साठी जेवढं गरजेचं आहे तेवढं डेफिनेटली कळेल. आय मेक शुअर. पण ते तुम्ही वाचलं आणि सारखं सारखं वाचलं, समजून घेतलं तर ते कळेल. लक्षात आलं? मी तुम्हाला आणखीन एक बाब आत्ताच सांगतो. Don't be satisfied with your understanding of concept and issues. Satisfied जब हो जाओगे, आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे समझ में आया, आप समझो वहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग रुक. ये नेवर एंडिंग, हमेशा चलते रहे.
बस एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना आपको समझ में आए, और अपने आप से खुद से कहीं और ना पढ़े हुए भी अगर आंसर जब लिख पाओगे तब आप समझ लो कि अपना जितना यूपीएससी के लिए जरूरी है उतना हमें आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत है। Everyone. So thank you so much. See you in the next week. अच्छा एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट, अगर आप नेक्स्ट वीक इमीडिएटली क्लास चालू कर रहे हो तो मैं बताऊंगा कि आप 11th स्टैंडर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है वो डायरेक्ट ले लो पढ़ने के लिए। अगर वो नहीं समझता तो आप फिर 8 9 10 वाला ले सकते हैं, 8 ऑनवर्ड्स।